Pakistan has made remarkable progress in its poverty eradication efforts in the past decades. By 2015, approximately 32 million people were pulled out of poverty. But COVID-19 has reversed the gains the country had made over the last 30 years. An estimated 10 million more people are expected to fall into extreme poverty from the existing 50 to 60 million poor people in the country. Everywhere there is already clearly signals that the number of poor, unfortunately, will most probably increase if government do not very quickly engage into particular support packages. The reality is, Pakistan has been in financial trouble well before the start of the pandemic, relying heavily on loans to keep the fragile economy afloat. And now, COVID-19 has added an immense pressure on the country's already struggling economy. Well, the economy of Pakistan is unfortunately and sadly fragile. ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਛੱਡਾਂ. Will the government under its leader Imran Khan be able to bring relief to the pandemic-stricken poor? And they truly are in terms of the good governance and management and delivery systems that are in place. But as we see now with the pandemic, they are by no means sufficient or comprehensive. And the real vulnerable groups, such as the informal economy workers, the abject destitute, they just really fall through the cracks. So, while I think the government's efforts are commendable, but they're not entirely effective when it is targeting the real poor. And Arshad is one of them. Until today, he's been left in the lurch. He has been frantically moving from place to place, asking for help to ease his financial burden. But aid is nowhere in sight. आज किसी दायरे में किसी गारमेंट में किसी मेरी मदद नहीं की थी. लोगों राशन मिलते रहने अगे पीछे मिलते रहने मैंने कोई चीज़ मिली ही नहीं है. मैं क्या कोई दायरा हो गया कोई फैक्ट्री होगी मेरी किसी बिल्कुल मदद की ही नहीं है. बिल्कुल जग जान मिलता रहा जो टाइम उन्होंने वो टाइम इन्हें गौर नहीं किया. बिल्कुल जो शनाख्ती कार्ड दी फोटो कापियाँ भी मैं जमा कराई बतेरा अगे पीछे दौड़े बजा किसी मदद नहीं की फिर बात ही क्या करनी सी. शनाख्ती कार्ड दी नकल लै लेंदे सन बात ठीक है टाला वाला कार्ड छोड़ा. Arshad has not paid his home rent for the last 4 months. His landlord even threatened to evict him if he doesn't pay his unpaid rent in 3 days. With mounting bills to settle and loans to repay, Arshad has run out of ideas on how to resolve his financial problems. He even contemplated on selling one of his kidneys as a quick way to get out of his predicament. ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਛੱਡਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਆਂਗੇ. ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਠਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਆ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ. गुर्दा ना बच्चे क्या गुर्दा बेच के वेच गया तो फिर जड़ा गया इस टाइम टेंशन भाई किराए दी तो बस खान पीन दी कोई नहीं करदा जी. बाकी तो अल्लाह ताला चलो माड़ा चंगा नाल निजाम टोरी रखदा रात दी रात सिर्फ किराए बिल्लां दी होंदी ते खान पीन दी होंदी है. बच्चों ते नहीं ना भाई इस गल नाल है. बच्चे ते आदम भी ठीक है जिथों दिल ने बिल लैके शाम ते शाम नूं दिओ. बच्चों तो मंगना बच्चे तो इन्हें चीज़ सोचते पे हालात खराब. पीस होए मैं मजदूर हाँ ला दो मेरी चपनी टूटी हुई है डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाओ. चपनी मेरी टूटी हुई पीस 3 पीस होए जी. Fortunately, the owner of the cafe he works for is willing to offer a helping hand during his time of need. वो इन्हां से जड़ा कोरोना की वजह तो गरीब होंदे जांदे हैं. बिल्कुल जड़ा हालात बहुत खराब है. तो हर वक्त बाजी जी जड़ा मैं डर लगा रहा है बिल्कुल जड़ा कोरोना की वजह तो मरना या भुख की वजह तो मरना है. तो बहुत मैं गरीब होंदा जाना. मैं अपने हर टाइम मैं बच्चों की जड़ा रोटी भी ना पूरी कर सकता जी हाँ. आज हर टाइम मैं जड़े बच्चों की रोटी भी ना पूरी कर सकता इंज मेरा हालात हो चुके हैं.
मैं सर ये जब कोरोना वायरस जब शुरू हुआ ना, जब लॉकडाउन मतलब हमें 10,000 रुपया, उधर जरा शाम को छुट्टी करता हूँ, इधर जरा राजू के पास जाता हूँ, उधर जरा अंदाज़ा को 7,000 रुपया उधर मिल जाता, उधर फिर जरा ये घर के जरा वसाइल खर्चे नहीं पूरे होंगे, जरा मकान का किराया देना होंदा, बत्ती का बिल देना होंदा, गैस का बिल देना होंदा, अगों फिर जरा ये बीमारियाँ 100 मेडिकल सरकार इस तरह निज़ाम नहीं पूरा होंदा गरीब बनना। His financial situation, however, took a turn for the worse during the pandemic. That was when several major cities were placed under lockdown in a bid to curb the spread of the disease. Factories were closed and all business activities were disrupted. All of a sudden, Arshad lost whatever little income he had received every month. जिस टाइम जो कोरोना आया सी उस टाइम हालात ख़राब हो गए सन, जो कारोबार बिल्कुल बंद हो गया सी। सुबह फिर जो शाम को जो उधर राजू के पास जाता हूँ तो उधर रोटी लेकर आन के बच्चों को खवांदा सा। कोई समझ नहीं आती पी मैनू मैं बच्चों वास्ते करा कि रोटी पूरी करा या बेटी उठावा या की करा, कोई मेरे दिमाग की गल नहीं पी पैंदी बाजी जी। आ तो किराया देना है, बिल देना है, बत्ती का सूई गैस का बिल देना है, अगों फिर जरा कि बाहर जो कर्जे लोगों के देने चुक चुक के खाई जा रहे हैं। इतना वसाइल नहीं है भाई बच्चों का खर्चा पूरा कर लवां या बाहर कर्जा ले दे लवां। Arshad's sister, Mariam, had to resort to begging out of desperation in order to survive. बाहरों में निकलता भाई सर जी हम जाते तो मैं लंगर ले आओ भाई को। हाँ तो लंगरदारे जाना है ना, लंगर इधरों भी लाने उधरों भी लेके आने बच्चों तो खवाना ना लंगर, बच्चों का तो पेट भरना है जनाब, बंदा सब्र कर सकता, बच्चे तो नहीं ना सब्र कर सकते। आटा ना के होए ना कोई चीज़ है ही नहीं का। चलो फिर जब किसी ना किसी पास कर दें। मैं तो आख्या सी फर्नीचर का लवा लो, कोई जो 2 पैसे मिलते हैं फर्नीचर बेच दो। वो भी करना भाई वो भी ਤੁਹਾਡਾ ही है ना। वो भी जो फर्नीचर वाले दे नाल गल की, वो भी जो दुकान बंद है, दुकान खोल ही नहीं रही। The Pakistani government has allocated some $900 million to help mitigate the impact of the crisis through emergency cash transfers. Each family received around $75 to help them get through the difficult period. Within 2 weeks of its launch, around 7 million of the country's poorest people had benefited from the scheme. According to a member of the Punjab Provincial Assembly, Wasiq Abbasi, the government has even extended loans to those who wanted to set up their own small business. Every provincial government has their own plans, they have their own channels to spend money, on programs to spend money, and on federal level they have their own. So कल हमें जो भी यहाँ पे दुकान खुली नजर है हम उसको अरेस्ट करेंगे, तो जो आम बंदा जो रोज़ रोटी कमाने जाता है और शाम तक उसको कोई रोज़गार नहीं मिलता है, और फिर उसके बच्चे बैठे होते हैं कि पापा आएगा तो शाम को खाना खाएंगे, तो जब पापा शाम को आता है